Hello everyone, this is first video 7th chapter. The name of the chapter is Death of a Partner. Partnership comes to an end on the death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners who take share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio as decided by them. तो किसी पार्टनर की डेथ जब हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को या तो वो पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग देमसेल्व्स या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करेंगे। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ के केस में भी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सेम ही है एज लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिचुएशंस आर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरीली in nature and it can be planned, whereas death of a partner cannot be planned. रिटायरमेंट जो होती है वो वॉलंटरी होती है, प्लान किया जा सकता है उसको, लेकिन डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट, वेयर एज ड्यू अमाउंट इज पेड टू द लीगल हायर्स ऑफ डिसीज पार्टनर। रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे पे किए जाते हैं, लेकिन डेथ के केस में जो पार्टनर का लीगल हायर होगा, जिसे एग्जीक्यूटर भी कहते हैं, उसको पैसे पे किए जाते हैं। Adjustment required to be made at the time of death of a partner are change in profit sharing ratio, so we have to calculate new ratio, adjustment for goodwill, adjustment for revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment for existing balances of reserves, accumulated profits and losses, determining the amount due to deceased partner, payment to deceased partner, legal hire or executor of his estate, and adjustment of capitals of continuing partners if agreed. So let's start with question number first. X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of remaining partners if Z dies. So first of all, we'll take the LCM 10 and the ratio will be 5:4:1. X share is 5, Y share is 4 and Z share is 1. Z is the deceased partner, so after Z death the remaining share will be 5:4. So new ratio amongst X and Y will be 5:4. This is your first question. Now question number second case first. Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:5:4. मोहन डाइड एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बताया था कि जेड की डेथ के बाद एक्स और वाई किस तरह से प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उनकी रिमेनिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी दैट वाज 5:4, वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई। लेकिन इस केस में उन्होंने बताया हुआ है दैट मोहन इज़ द डिसीज पार्टनर एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोहन शेयर बिफोर डेथ वॉज 5/14. Share acquired by Shiv, half of Mohan shares means 5/14 into 1/2, that is 5/28. Share acquired by Hari, 5/14 into 1/2 is equal to 5/28. New share of Shiv is equal to old plus gain. Old was 5/14, gain is 5/28, and new share of Shiv will be 15/28. Similarly, new share of Hari is equal to old 4/14 plus 5/28, that is Hari's gains, total 13/28. So new ratio amongst Shiv and Hari will be 15:13. This is your second question, case A. Question number 4. A, B and C were partners sharing profits in the ratio 4:3:2. A died, B and C will share profits in the ratio 2:1. So in this question, new profit sharing ratio is given. We have to determine gaining ratio. B's old is 3/9. B's new is equal to 2/3. B's sacrifice or gain is equal to old minus new. Old was 3/9. New is 2/3. Gain is 3/9. Similarly, C's old, C's new, C's sacrifice or gain is equal to 1/9 and gaining ratio will be 3:1.
Question number 7. Calculation of profit of deceased partner. Dinkar, Navita and Vani were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Navita died on 30th June. Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period, which were 6 lakh rupees. The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. The firm closes its books on 31st March every year. So profit sharing ratio is given 3:1. नविता बिजनेस में 3 महीने लगाकर मरी है एंड सेल फॉर दैट पीरियड इज 6 लाख. रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10%. So sale till 30th June 2017 is equal to 6 lakh rupees. Rate of profit on sale 10%. Navita's share of profit will be 10% of 6 lakhs. That will be 60,000. लेकिन वो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आएगा, उसमें से नविता का शेयर निकालने के लिए it will be multiplied by 2/6, which is Navita's profit share. 2/6 and Navita's share of profit will be 20,000. This is your 7th question. Thank you.